dicot stem. Secondary growth in dicot stem. ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि डाइकॉट स्टेम का अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? देयर इज रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल जो होता है दैट इज कॉन्जॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ बताया था, आपको याद है? और फ्लोएम स्ट्रैंड के ऊपर वी हैव सेमीलुनार पैच ऑफ पेरिसाइकिल व्हिच इज क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है। एंड देन आपको बताया था बिटवीन दीज वैस्कुलर बंडल वी हैव radially elongated primary medullary rays. These are primary medullary ray. ये आपका है पेरीसाइकल। और ये जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, दिस इज इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ना। अब देखो क्या होता है एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, व्हाट हैपेंस, cells of medullary ray, primary medullary ray become meristematic. ठीक है, they become meristematic and they produce interfascicular cambium. This is your interfascicular cambium। और ये जो था आपका ये है intrafascicular cambium। Now what will happen, this interfascicular cambium and intrafascicular cambium will join, they will join to form complete cambial ring। ऐसे करके ये आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। टू फॉर्म, ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। नाउ दिस वैस्कुलर कैम्बियम विल प्रोड्यूस secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outer side। ठीक है। This vascular cambium will produce secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outer side, and this cambial ring is more active towards the inner side। मैंने इसका जो एक्टिविटी है वो ज्यादा इनर साइड की तरफ रहेगा। So the amount of secondary xylem produced will be several times higher than amount of secondary phloem produced। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो जब सेकेंडरी जाइलम ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, इट विल एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट विल रिजल्ट इन क्रशिंग ऑफ प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्रश हो जाएगा एंड इवन पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम आल्सो गेट क्रश्ड। ठीक है, तो प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम जो है, प्राइमरी फ्लोएम तो पूरा क्रश कर जाएगा एंड पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम विल गेट क्रश्ड। ठीक है, और जो प्राइमरी जाइलम है इट विल रिमेन टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द पिट। ये क्वेश्चन आया हुआ था
कि अगर आप किसी ट्री ट्रंक को देख रहे हो तो सबसे इनर मोस्ट में कौन सा पार्ट आपको मिलेगा? पिथ भी क्रश हो जाता है ऐसे, लेकिन प्राइमरी जाइलम क्रश नहीं होता है, तो वो प्राइमरी जाइलम होगा। या आपसे कहीं पूछा जाए विच पार्ट विल बी क्लोजर टू पिथ, ठीक है। फिर से बताता हूं क्रस्टिंग और देखो, अब क्या है कि वास्कुलर कैम्बियम हमारा बन गया। अब ये जो वास्कुलर कैम्बियम है, इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स द इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स द आउटर साइड, एंड दिस कैम्बियल रिंग इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड, अंदर की तरफ ये ज्यादा एक्टिव होगा। So the amount of secondary xylem produced will be far greater than amount of secondary phloem produced. Now, अब जब अमाउंट ऑफ सेकेंडरी xylem ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक्सपैंड करेगा, तो ये क्या करेगा, प्राइमरी फ्लोएम को तो पूरा क्रश कर देगा, प्राइमरी फ्लोएम पूरा क्रश हो जाएगा, एंड इवन पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम विल बी क्रश्ड। इसके अलावा जो अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम है दैट विल रिमेन इंटैक्ट, प्राइमरी जाइलम क्रश नहीं होगा, ठीक है। देन along with the secondary xylem and secondary phloem, this vascular cambium will also produce a radially elongated parenchyma, a secondary medullary ray. It will produce secondary medullary ray. उससे क्या होगा, जो सेकेंडरी मेडुलरी रे है उससे जब फ्यूचर में फिर से सेकेंडरी ग्रोथ होना होगा तो उससे फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो हमारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये तो पहले से प्रेजेंट है, तो मतलब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी था हमारा, और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये तो नया बना है, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो दैट मींस इन केस ऑफ स्टेम वास्कुलर कैम्बियम इज partly primary and partly secondary in origin। समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? अगर आपको याद होगा तो रूट में मैंने आपको बताया था कि वास्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, याद है कुछ? ठीक है, तो पहले लिख लीजिए फिर इसको बना लीजिएगा। मैडम, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, at the time of secondary growth, cells of primary medullary ray, cells of primary medullary ray become meristematic, become meristematic and forms interfascicular cambium, and forms interfascicular cambium next one लिखिए, this interfascicular cambium joins with this interfascicular cambium joins with intrafascicular cambium intrafascicular cambium to form complete cambial ring or vascular cambium, ठीक है। So in case of dicot stem, to form vascular cambium, vascular से पहले
मुझे क्या पता मैंने क्या बोला, अभी पहले लिख लो। This vascular cambium, this vascular cambium is partly primary and partly secondary in origin. Partly primary and partly secondary in origin. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Vascular cambium produces secondary xylem towards the inner side. Secondary xylem towards the inner side. And secondary phloem towards the outer side. Secondary phloem towards the outer side. It is more active. It is more active. It is more active towards inner side. It is more active towards inner side. So the amount of secondary xylem produced So the amount of secondary xylem produced is several times higher than is several times higher than amount of secondary phloem produced. Amount of secondary phloem produced. Next point लिखिए. As large amount of secondary xylem is produced, as large amount of secondary xylem is produced, primary phloem and part of secondary phloem, primary phloem and part of secondary phloem gets crushed, gets crushed as large amount of secondary xylem is produced, primary phloem and part of secondary phloem, primary phloem and part of secondary phloem gets crushed gets crushed, whereas primary xylem remains intact towards the inner side. Remains intact, intact, intact towards inner side. बना लीजिए इसको जल्दी से. नहीं, सॉरी, एक पॉइंट रह गया.
Along with the secondary xylem, along with the secondary xylem, vascular cambium also produces vascular cambium also produces radially elongated parenchymatous radially elongated parenchymatous secondary medullary ray towards the inner side. बना लीजिए इसको. Secondary medullary ray towards inner side. इस डायग्राम को बना लीजिए. Vascular cambium is partly primary and partly secondary in origin. Partly primary and partly secondary in origin. जिसने ये पूछा. बन गया सबका डायग्राम. बनाओ यासी का. चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वुड. WOOD wood. Next heading is wood. How you will define wood? लकड़ी को कैसे डिफाइन करोगे? तो wood is nothing but it is secondary xylem. Write down. Wood is technically nothing. Wood is technically nothing but secondary xylem. तो ये जो सेकेंडरी जाइलम है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वास्कुलर कैम्बियम. ठीक है. और ये जो वास्कुलर कैम्बियम है इसका जो एक्टिविटी है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम activity of vascular cambium is affected by several environmental and physiological factors. ठीक है. Write down heading types of wood. फर्स्ट लिखिए स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड एंड ऑटम वुड और लेट वुड. स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड एंड ऑटम वुड और लेट वुड. मैंने कहा एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम इज अफेक्टेड बाय सेवरल environmental and physiological factors. ठीक है. Now, spring wood or early wood and autumn wood or late wood. तो टेम्परेट एरिया में देयर इज क्लियर कट सीजनल वेरिएशन.
ठीक है। जब आप टेम्परेट एरिया में जाइएगा तो वहां पे स्प्रिंग आता है, ऑटम आता है, तो अलग अलग सीजन है। तो सीजनल वेरिएशन हो तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होगा, एंड दैट विल अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो स्प्रिंग जो है इट इज फेवरेबल सीजन। तो जब फेवरेबल सीजन रहेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। अगर प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा तो प्लांट को वाटर मिनरल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। अगर प्लांट को मिनरल और वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा तो वो जाइलम वेसल जो प्रोड्यूस होगा उसका ल्यूमन साइज क्या होगा? बड़ा होगा, ताकि ज्यादा सप्लाई कर सके। तो हम कहते हैं इन स्प्रिंग वुड द साइज ऑफ जाइलम वेसल इज बिगर, ठीक है, एज इट हैज टू सप्लाई मोर ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसको हम लोग कहते हैं अर्ली वुड और स्प्रिंग वुड। अब ऑटम जो है अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ कम हो जाएगा। ग्रोथ कम होगा तो वाटर मिनरल का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। वाटर मिनरल का रिक्वायरमेंट अगर कम होगा तो ऑब्वियस सा चीज है कि जो जाइलम वेसल होगा इट विल बी विथ नैरो ल्यूमन साइज, ठीक है। इन ऑटम वुड जाइलम वेसल विथ नैरो ल्यूमन साइज विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। थ्रो डाउन इन टेम्परेट एरिया, in temperate area there is clear cut seasonal variation। वाटर रिक्वायरमेंट इसलिए वाटर क्योंकि ग्रोथ कम है ना, तो ग्रोथ कम होगा तो वाटर मिनरल का रिक्वायरमेंट कम होगा, ज्यादा होगा। हम्म, ठीक है। मैडम इन टेम्परेट एरिया there is clear cut seasonal variation। there is clear cut seasonal variation, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए स्प्रिंग इज फेवरेबल सीजन। स्प्रिंग इज फेवरेबल सीजन so large amount of xylem element is produced। spring is favorable season so large amount of xylem vessel is produced with a large amount of xylem element is produced with vessel having large lumen size, with vessel having large lumen size, and such wood is known as such wood is known as spring wood or early wood। spring wood or early wood। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए autumn autumn is unfavorable season। autumn is unfavorable season during this less amount of xylem element is produced during this less amount of xylem element is produced and and xylem vessel with narrow lumen size is produced। xylem vessel with narrow lumen size is produced।
Such wood are referred as autumn wood or late wood. Such wood is referred as autumn wood or late wood. अब देखो, एक बार स्प्रिंग वुड प्रोड्यूस हुआ, फिर ऑटम वुड हुआ, तो एक साल के अंदर ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो स्प्रिंग वुड है और ऑटम वुड है, ये दोनों मिलके प्लांट में एनुअल रिंग बनाएंगे। ठीक है, एनुअल रिंग बनेगा और आप एनुअल रिंग को काउंट करके प्लांट का एज बता सकते हो। जितना एनुअल रिंग मतलब उतना एज, और इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। दिस इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। राइट डाउन। Spring wood and autumn wood, spring wood and autumn wood together forms annual ring together forms annual ring, and by counting these annual rings, नहीं, साइज सेम नहीं रहेगा, वैरी करता रहेगा, गर्थ बढ़ता जाएगा, वैरी होगा। By counting these annual rings, age of plant can be determined. Age of plant can be determined, and this is known as dendrochronology. This is known as, by counting these annual rings, age of plant can be determined, and this is known as dendrochronology. ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेकेंड, ring porous wood and diffuse porous wood. Ring porous wood and diffuse porous wood. ठीक है, अब देखो, मैंने बताया स्प्रिंग वुड विथ लार्ज वेसल ल्यूमेन साइज, ऑटम वुड विथ स्मॉल ल्यूमेन साइज। तो ऐसा वुड जिसमें xylem vessel of different lumen size is produced is referred as ring porous wood. ठीक है, तो रिंग पोरस वुड कहां मिलेगा? टेम्परेट एरिया के प्लांट में मिलेगा, जहां के वुड में जाइलम वेसल का साइज जो है वो वैरी करे, बड़ा छोटा सब मिले। दूसरा होता है डिफ्यूज पोरस वुड। डिफ्यूज पोरस वुड क्या है? ऐसा वुड जिसमें सिर्फ एक ही साइज का जाइलम वेसल हो। ये कहां पे मिलेगा? ट्रॉपिकल एरिया में। क्यों ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में देयर इज नो सीजनल वेरिएशन। कोई सीजनल वेरिएशन अगर नहीं है तो सालों साल भर एक जैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन रहेगा, तो साल भर ही कैम्बियम एक तरीके से एक्ट करेगा, तो एक ही साइज का जाइलम वेसल प्रोड्यूस करेगा। तो सच टाइप ऑफ वुड इज रिफर्ड एज डिफ्यूज पोरस वुड। समझ में आया? Okay, write down ring porous wood. Such type of wood is present in trees of temperate area, where xylem vessels of different size is present. Where xylem vessel of different size is present.
ठीक है. Next is diffuse porous wood, where xylem vessel of different size is present. Xylem vessel of different size is present. Next is diffuse porous wood. Such type of wood is present in trees of trees of tropical area, where there is no seasonal variation, where there is no seasonal variation. As a result, xylem vessel of only one size is present. As a result, xylem vessel of only one size is present. ठीक है. ठीक है. ना नेक्स्ट लिखिए. हार्टवुड और ड्यूरामेन एंड सैपवुड और एल्ब्यूरमेन. हार्टवुड और ड्यूरामेन एंड सैपवुड और एल्ब्यूरमेन. अगर आप किसी पेड़ को काटते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपका ट्री ट्रंक ऐसे दिख रहा है, तो आप देखते हो कि सेंटर में जो एरिया होता है वो डार्क होता है. सेंटर का एरिया आपको डार्क दिखेगा, है ना. और जो पेरिफेरी है वो आपको लाइट दिखेगा. ये जो डार्क एरिया है दैट इज हार्टवुड, और जो पेरिफेरल लाइट कलर का एरिया है दैट इज सैपवुड. दैट मीन्स दिस हार्टवुड इज प्रेजेंट इन द कोर ऑफ ट्री ट्रंक. जो ट्री ट्रंक है उसके कोर में प्रेजेंट होगा. ठीक है, क्लियर है ना. अब ये जो हार्टवुड है, ठीक है, ये जो हार्टवुड है ये डार्क कलर का होगा. डार्क कलर का क्यों होगा? इसलिए डार्क कलर का होगा क्योंकि यहां पे देयर इज डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस सच एज गम, रेजिन, टेनिन्स, एसेंशियल ऑयल एक्सेट्रा. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस दिस वुड इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. दैट्स व्हाई इट इज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. क्योंकि इस पे माइक्रोब्स अटैक नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण क्या इसका इंपॉर्टेंस है. ठीक है. अब देखो, अब जो पेरीफेरी है, ठीक है, पेरीफेरी में जो वुड है वो लाइट कलर का है, इसी को हम लोग कहते हैं सैपवुड. अब ये जो कोर में वुड है हार्टवुड, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड इट इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव. दैट मींस इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. यहाँ पे जो जाइलम होगा इट इज फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, मतलब वाटर और मिनरल ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे जो जाइलम वेसल है, मान लो ऐसे करके ये एक जाइलम वेसल हम अगर किसी का देख रहे हैं हार्टवुड का, तो what you will observe here, xylem vessel is blocked by a balloon-like structure. This is a balloon-like structure. इसको हम लोग कहते हैं टाइलोस प्लग, और इस फिनोमिनन को कहते हैं हम लोग टाइलोसिस. ठीक है. ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बना इसको कहते हैं टाइलोस प्लग एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टाइलोसिस. और ये बनता कैसे है? इट इज बिकॉज ऑफ ballooning of xylem parenchyma.
तो होता क्या है कि जाइलम पैरेन्काइमा बलून की तरह फूल जाएगा और वेसल को ब्लॉक कर देगा। ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप देखिएगा 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है टाइलोस प्लग का। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इन हार्टवुड xylem vessels are blocked by tylose plug, which is a balloon-like structure which arises as a result of ballooning of xylem parenchyma, and this phenomenon is known as tylosis. ठीक है, जो पेरिफेरी में सैपवुड है, it is physiologically active and it is involved in transport of water and mineral, and it is of less economic importance. क्लियर है पॉइंट सबको? Radon, heartwood or duramen? Heartwood or duramen? It is present. It is present in the core of tree trunk. It is present in the core of tree trunk. It is dark in color. It is dark in color due to deposition of substances it is dark in color due to deposition of substances such as gums, resin, oils, tannins, lignin, etc. etc. Next point लिखिए. Because of presence of these chemicals, they are highly resistant to microbial activity. They are highly resistant to microbial activity. And that's why they are of great economic importance. That's why they are of great economic importance. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Heartwood is physiologically inactive. Heartwood is physiologically inactive. And it provides mechanical support. And it provides mechanical support. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Xylem vessel present in heartwood is blocked by xylem vessel present in heartwood is blocked by a balloon-like structure known as tylose plug. And this phenomenon is known as tylosis. And this phenomenon is known as tylosis. In bracket, write down
Tylose plug arise as a result of Tylose plug arise as a result of ballooning of xylem parenchyma. Ballooning of xylem parenchyma. नेक्स्ट लिखिए सैपवुड और अल्बुमिन. सैपवुड और अल्बुमिन. ठीक है. इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ ट्री ट्रंक. इट इज प्रेजेंट in the periphery of tree trunk. It is light in color. It is light in color. Physiologically active. Physiologically active. That is involved in transport of water and mineral. Involved in transport of water and mineral. ठीक है. It is of less economic importance. It is of less economic importance. ठीक है. जल्दी से अगर ये वाला डायग्राम बनाना तो बना लो जल्दी से, अगर इच्छा है तो. नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है.